Okay, go ahead. Very good morning to one and all present here. On behalf of Rotary Club of Bombay West and Mahaseva, I welcome you all to the last lecture of this year's series, which we have started last year with the help of our past president, Rotarian Anand Gupta ji, and Sri Ramesh Prabhu ji. We are thankful to them, and this is our second virtual meeting due boon of technology. Today's guest speaker is our own Rotarian advocate Hiralal Sutharji, and is going to tell about GST. And Sri Raju Saxena, chairman of Mahaseva, is throwing light on this pandemic going on. Wish you all the best, and I hope we'll continue. And please, may I Ji to say about our Rotary Club. Thank you. Good day. Okay, bye, Samadhi. Yeah, I'm there. For some time, I'll be there. Yeah, okay, please be there. Yeah, Mr. Sharma, please go ahead. Sunil Sharma sir. यस सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। अभी पार्टिसिपेट 21 हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग है संडे की। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। करता हूँ बिल्कुल। महासेवा और रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट की तरफ से आज जो लेमन और हाउसिंग लॉ के रिलेटेड जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के संबंधित आज हमारा ये ऑनलाइन सेकंड सेमिनार है। सुतार साहब, सेकंड सेमिनार है। यस। इस लॉकडाउन में और इस कोरोना संकट काल में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारा जैसा ये रोटरी क्लब की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया है, और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीएसटी एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे रिनोल्ड एक्सपर्ट है एडवोकेट हीरालाल एम सुतार साहब है, चेयरमैन है लेमन एंड हाउसिंग सेमिनार के। मैं उनको इनवाइट करूंगा, उनका स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से। सुतार साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। I take this opportunity on behalf of my club to welcome you all. Let me throw light on the issues of this seminar, how it started, and this being the last lecture of this year. I would also at the same time like to thank our office bearers and the persons who have come together to help us. It is my pleasure to welcome you all in this Layman Education Series seminar. I'm happy to inform you that this series of seminar was started by the then president of Rotary Club of Bombay West, Rotarian Anand Gupta, in the year 1819, and the same is continued in the current year, that is year 1920, under the presidency of Rotarian Samaptiben. This lecture series has been very popular and has been very useful to the members of cooperative societies and the managing committee members also. I'm very thankful to CA Ramesh Prabhu, who is the chairman of MSWA, who has played a very important role in organizing these meetings right from the day one, and also so help us invite the speakers from time to time to deliver talks on various subjects of interest to all the participants. Friends, my Rotary Club of Bombay West was established in the year 1954, and as such, it has completed 67 years of useful human service to the society and the needy people. During these days of coronavirus also, my club has helped a lot of people, needy people, by distributing foods and other articles, medical help, PPE kits, masks, and lots of articles of use to the hospitals as well as the people in need. I express my hearty thanks to Sri Anand Gupta, who has also happened to be the office bearer of the Builders Association of India, at whose instance during his presidency of the Rotary Club of Bombay West, this project was started in the year 1819, and also he has been instrumental in motivating me and guiding me for the whole holding of the seminar during the current year also. I also thank Rotarian Naresh Merchant and also Director of Community Service 1 during the year 1819, and the current director Minu Lalwani, who has also been very active for organizing this seminar. Thank you very much, friends.
Now, Mr. Sharma, Mr. Vishal, should I take over for my lecture, or any other formality remains to be Yes, done? no formality, but Mr. Sutar, participate is only 24. हम लोग और 5 Let us minutes go रुक for सकते हैं. something else. You go ahead with some other small. Yes, other presentations Yeah. या मिस्टर Yeah, मिसेस and then we'll do. संपाप्ति पटेल यदि कुछ बताना चाहें, आप जो रोटरी क्लब अभी समय संकट के समय कोरोना में कहाँ कौन से आपके सोशल वर्कर जो हैं, जो तमाम जो लोग हैं रोटरी क्लब के, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, वो आप ब्रीफ दें और लोगों को जानकारी लगे, ताकि कुछ लोग और जो है रोटरी क्लब के और तमाम लोग जुड़ सके. जी. हमने I will not take the name of the epidemic because I want it to go. So no wonder our club with the help of our members and big donors, we have helped spread distributing groceries to many people, like more than 1,000. And at covering our neighboring area like Juhu Kolivada. Then recently we have given to our own Suti schools parents who are staying far away, and provided groceries, PPE to hospitals, and like Cooper Hospital, then to police station, and we have given shield also. Our Rotarian Sandeep Parikh, he himself is going and delivering these groceries and PPE and shield and sanitizer and all that, and he's like our warrior. Dharmendra Pateja has done in his own building, distributing to the neighboring societies, watchmen and all that. Rotarian Dr. Pratima Kotkani also has given to Cooper Hospital this PPE and this measuring, infra thermometer, and all at the same time food, all Rotary clubs who had started food seva, means cooked food, were the kitchen seva was started, and you won't believe, I cannot give the exact number, but still, first it was 10 days, then it increased to 20 days, then 60 days. Still till today it is continued. Kitchen is on, and nobody knows from where the money comes. And our DG, we are thankful to DG Harjit Singh Talwar. Under his able guidance, all the Rotary clubs have done good. We have joined hand with Warsaw Club and distributed ready food, khichdi and all that. With other club NGOs, we have joined our hand, and personal level also we have done all these things. Yeah. Yeah, thank you very much. And recently I have joined hand with, recently I have joined hand with Rotary Club of Calcutta, and for helping that cyclone at Calcutta. Oh, very good, very good. देखा आपने किस तरह से मिसेस पटेल बता रही हैं कि रोटरी क्लब जुहू कोलीवाड़ा हो, जहां तमाम जरूरतमंद लोग हैं उनको चीजें मुहैया करवा रही हैं, साथ ही पीपीपी जो किट है और थर्मल की जहां जरूरत है, पुलिस स्टेशन हो या फिर वो हॉस्पिटल्स हो, तमाम मुहैया करवा रहे हैं. तो मैं आप लोगों को रोटरी क्लब की जो जज्बा है कोरोना के संकट के काल में, मैं यही कहूँगा जो आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, उस पर मैं एक 2 लाइन से आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. मिसेस पटेल और हीरालाल जी और तमाम रोटरी क्लब के जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी अधूरे नहीं, कोरे नहीं होते. पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते. जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते. जो सब करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते. और हमारे सबके जो सपने हैं, ये सुजलाम सुफलाम भारत
और सभी तरफ से विकास हो, खुशियां हो, उस तरह की जो आप लोग सोच रखते हैं, हमारी भी महासेवा की और MNS मीडिया न्यूज सर्विस की भी यही सोच है। मैं इसी के साथ में इनवाइट करूंगा हमारे महासेवा के जो प्रधान सेवक है चेयरमैन रमेश प्रभु जी को, वो वेलकम स्पीच करें और जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे हम इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। प्रभु सर, गुड मॉर्निंग। Welcome. Yeah. Good morning. Yeah. Would you like to start with the national anthem? We can start the sir. program. It is already. Okay. No, we don't. We can go ahead. No national anthem here. Okay. Thank you very much. So I welcome Sampati Ben and Samapti Ben. Yeah. And Advocate Sutar. Yeah. Advocate Sutar. And last 1 year under your presidentship, we have done programs continuously. Even during lockdown, we have continued to have the programs. I think only one we missed. That was because of the immediate lockdown. We were not knowing what to do. But otherwise, I think we have done entire 11 programs. Thank you very much for giving us an opportunity and being with us for the entire throughout the year. And during the year, we have got a lot of support from your people, especially, of course, Sutar Sab is there and Minu is there. Everybody has cooperated us. And we are, of course, coming to the end of the your year, Rotary year, where, of course, up to 30th June, you are there as a president. So on behalf of everybody, those who have been with us throughout the programs throughout the year and who have supported us and you in our adventure of this venture of this, and I think we have done quite a bit. So thank you very much, and I welcome each one of you, and I also welcome Samapti Ben to give her inaugural address and then call the meeting for the order. Thank you very much, madam. Over to you. I've already given my inaugural welcome. Excellent. बिल्कुल। Sorry. Yes, Samapti Patel जी का वेलकम I just joined. Yes. Thank you very much. मैं आज की इस सेमिनार वेबिनार की ये हमारा सेकंड रोटरी क्लब के साथ है महासेवा का ऑनलाइन सेकंड वेबिनार सेकंड है। वेबिनार सेकंड है, लेकिन सालों से we are on the second year of layman and housing laws. वेरी गुड। लेमन एंड हाउसिंग लॉ के बारे में हमारा ये गठबंधन जो है रोटरी क्लब और महासेवा का, ये करीबन 2 साल जूना है, पुराना है। और ये ऑनलाइन का हम जो डिजिटल रूबरू लोगों से डिजिटल जो मिल रहे हैं वर्चुअल, वो करीबन दूसरा सेकंड है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ रोटरी क्लब और महासेवा की तरफ से। और आज का इस वेबिनार का आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है GST एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स क्या है, इस विषय पर गहन जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट रिनोल्ड एक्सपर्ट है एडवोकेट हीरालाल M सुतार, और उनको इनवाइट करूंगा वो आए और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो रखें और बताएं तमाम जो सर्कुलर्स क्या है उसके बारे में। जी वेलकम मिस्टर सुतार, स्वागत है आपका। Thank you, Mr. Sharma, and my co-speaker, as well as Ramesh Vain, President, and all the participants. Let me at the outset bring to the notice of these participants that the object of starting the series, since last 2 years it has been started, is two-pronged: to educate the people in general about the cooperative laws and the various procedures and formalities, and at the same time also to educate the members of the cooperative housing societies and the managing committee members. And therefore, purpose and object being limited, I will restrict myself to providing important aspects of applicability of GST to cooperative housing societies, and will avoid any issues which are either debatable or arguable in the court of law, which may require very many arguments in support or against such debatable issues. I believe at the time of this 30 minutes will be well spent if I can educate by sharing my thoughts on the larger issues of day-to-day concern to the cooperative societies, its members, and the managing committee members. However, let me assure you, friends, that if there is any specific query, I will be
very happy to answer to any such queries. Friends, cooperative societies are residence welfare association, and the resident welfare associations are constituted with the purpose of providing land to the members for construction of houses for them, to provide houses and flats to its members, to maintain the properties, and also to provide other services like the maintenance and the security in the building. I have in mind about 10 important major issues which I'll just bring to your notice so that you understand that what I'm going to deal with during my talk. These 10 are reason for applicability of GST to RWA, that is called society. What are the reasons why the societies are covered under this law? Then the turnover up to which the RWA societies are not required to be registered under the GST laws. Then under what circumstances the societies will be not obliged to register even though the turnover exceeds the specified limit of 20 lakhs rupees. Then even if the societies are registered under GST laws, under what circumstances it will not be required to charge GST to its members. The fifth one is whether the exemption is available in case of bill exceeding the exemption limit. Say for example, specific given up to 7,500 rupees, whether the exemption is applicable beyond this limit. The next is which goods and services provided by societies are liable to GST. Then which supply of goods and services are exempt under the GST law. Then comes what are the benefits like input tax credit, because when the society purchases goods or services, it pays the GST if the supplier is the GST registered. So what is the benefit? Is the society eligible to get any benefit like input tax credit? The next is liability on the society on the reverse charge mechanism basis, which is a part of the GST laws, and the ITC offers RCM based payment made by the society, if any. And last but not the least, friends, the question whether services of cooperative society have become expensive after introduction of GST compared to that under the service tax regime prior to advent of GST. These are the very important issues, specific issues. In the limited period, even if we understand these issues thoroughly, it will be a great boon to our knowledge, and the management of the society that as a member will be able to function with cooperation in real sense. Friends, I will now share my views on the about 10 issues which are extremely important for day-to-day management of cooperative societies. I am confident, friends, that at the end of sharing my thoughts with you on these issues today, you will be surely wiser on these topics. Let me once again repeat what I said initially, that I will not deal. We are better than most families. Their applicability. Assume that GST laws are applicable to cooperative housing societies. Now I'll start point by point. The first point is reason for applicability of GST laws to the cooperative housing society. Friends, what are these cooperative housing societies? Simply put, the cooperative housing societies are the collective body of persons who stay in the residential property. As a consolidated body, collective body, they would supply certain services to its members and collect the statutory dues from its members and pay to the statutory authorities. It will remit this payment to the statutory authorities, and it will maintain the building as well as the security of the society property. GST laws apply to persons who have been specified in the CGST Act. The GST applies to the persons. Now, what is a person which has been defined under the CGST definition? The cooperative society registered under any law relating to cooperative societies is specifically included in the definition of person, and therefore there is no doubt in my mind that the cooperative housing societies
are very much coming under the purview of GST laws. As far as Maharashtra is concerned, friends, we are registered under Maharashtra Cooperative Society Act 1960. Now, primarily GST is applicable on supply of goods and services or both, either supply of goods or supply of services or both. And they provide amenities and the services to the common amenities and service to the members. What are these supplies of goods and services to which GST laws apply? This is the first question which may arise in our mind. The supply of goods and services is defined under the GST Act to mean all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, and disposal. These services are agreed to be made available for a consideration by the cooperative society in course of or furtherance of its business. Now, can you say that this is providing service is the business of the cooperative society? That is a pertinent question. And the arguments have been made that this not being the profit making of the entity, there is no question of business, and furtherance of business is not satisfied, and therefore the GST law may not apply. However, let me the word business has been also specifically defined, which includes specifically provision by a club, association, society, or any such body for a subscription or any other consideration of facilities or benefits to its members. Now, this has been specifically mentioned about the business and furtherance of this, and therefore, to my understanding, the societies are very much coming under purview of GST laws. Having understood various provisions of GST law, it is clear that the cooperative housing societies are covered under the provisions of GST law. Now, with this, I will go to the second question. Now, what is the second question which I had initially decided to enlighten? Turnover up to which societies will not be liable for registration under the GST law. All the societies in blanket are not required to be registered. Only when they have a particular turnover, here the 20 lakhs rupees, then only they are required to be registered. If the turnover of housing society is about 20 lakhs rupees in a year, it needs to take registration under the GST law. A housing society is liable to be registered under GST law if aggregate receipts exceed 20 lakhs rupees in the financial year. Friends, the question will arise. The aggregate receipt include receipts of all the exempted and taxable categories. This is a very important question, and it is many times asked that our services and our receipts do not include the taxable categories, or they are exempted receipts. Let me tell you, as far as the total turnover for deciding the liability for registration is concerned, friends, all the exempted receipts and the taxable category receipts are all to be clubbed to arrive at the turnover of 20 lakhs rupees specified for the purpose of registration of a cooperative society under the GST law. You may have the question in your mind that what if the maintenance charges per month per member of CHS cooperative society are more than 7,500, but the turnover does not exceed 20 lakhs rupees. See, the questions we have drafted with the intention that at the end of the answer, there is an absolute clarity about the obligation of a cooperative society to be registered under the GST laws or not. So the question, I'll repeat, a housing society is liable. You may have a question in your mind that what is the maintenance charges per month per member are more than 7,500, but the turnover of society is less than 20 lakhs rupees. Friends, even if the charges per member per month exceed 7,500 rupees, if the total turnover does not exceed the liability of 20 lakhs rupees receipts, the registration of such society is not required under the GST Act. The next question can be, what if the maintenance charges of every member is less than 7,500 rupees, but turnover of the society exceeds 20 lakhs rupees? That's exactly reverse of the previous question.
even if the charges per member per month do not exceed 7,500 rupees per month, the total turnover exceeds 20 lakh, the society is liable to be registered. These are separate points of discussion for which I will deal with subsequently, because my next question is on that point only. Now, the third question which I specified above is, under what circumstances the societies will not be liable to register in the GST even if turnover exceeds 20 lakhs. This is in continuation of the previous two questions. What I say, under what circumstances the cooperative society will not be liable to be registered under GST even if the turnover exceeds 20 lakhs rupees. Friends, any person engaged exclusively in the business of supply of goods or services or both that are not liable to tax, number one, or wholly exempt from the tax under this act in the GST Act, or under the integrated IGST Act, and the society also does not have provide any other taxable service to member or to any other outsider. Means the whole issue is, again I will refer, it is in the business of supplying goods or services or both which are not liable to tax. It is supplying the goods or services which are wholly exempt under the provisions of GST and the IGST, and the society does not provide any other taxable services to either member or to the outsiders. In these circumstances, even though the turnover is more than 20 lakhs rupees, the society is not required to be registered under the provisions of GST laws. It's very clear. However, we know this mostly is not the case for cooperative society, because cooperative society taxable services are provided by the society member, and therefore the societies, when the turnover exceeds 20 lakhs rupees, the receipt exceeds 20 lakhs rupees, they are liable to be from the GST Act. To summarize this particular answer again, thus if turnover of society is less than 20 lakhs, or even if the turnover is beyond 20 lakhs, but monthly contribution of individual member toward maintenance is less than 7,500, but services being exempt and the society is providing no other taxable services to its members or outsiders, then the society need not take registration under the GST law. Having understood the provisions as above, now we go to the next question, where our society is getting registered under the GST law. Then what are the consequences? The next question, the question number 4, which I have listed here in above, was when a resident society should not charge GST to its members, even though the society is registered under the GST law. Now, having registered also, it is not necessary that the society has to charge GST to its members. For that, I have given in detail as to under what circumstances, what are the various exemptions provided under the law for the societies not to charge GST to its members. Let me draw attention to the provisions clarified under circular which was issued on 28 June 2017. The circular at that time had granted exemption up to 5,000 rupees, which has now been revised upward to 7,500 rupees by another circular issued in January 2018. And therefore, as of today, if the charges of the society to the member do not exceed 7,500 rupees, that member will not be charged GST by the society. Now, what are these exemptions? 75. Is it everything is included 7,500 rupees, or there are some conditions? There are the conditions, and that is very important condition. What are these 7,500 rupees exemptions? These goods or services are for sourcing of goods or services from a third party for common use of the members in a cooperative society or a residential complex. So, what are these exemptions? These exemptions relate to the third-party goods or services procured by the society and provided to the member for the common use. And therefore, whatever society is giving service on its own, which is not procured from third party, will always be liable to GST.
Here we presume that the society registered under GST law. Now, what will not be included while calculating the limit of exemption? The non-taxable charges. As such, property tax, any tax, water tax, electricity shall not form part of the turnover of 7,500 rupees. Let me tell you, this exemption, because these are the services which are either provided by the government or by the local authority. Say, for example, any tax is the state government, property tax, local authority. Electricity and petroleum products are out of the purview of GST law itself. And therefore, these are the charges which are not forming part of 7,500 rupees. Now, friends, it is very clear. We know that exemption further questions arise in mind that if my bill exceeds 7,500 rupees, will I lose the exemption benefit? This is again a very important question. I'll repeat the question. If my charges, the charges being collected by society from me exceeds 7,500 rupees, what is the status? What will I be charged and on what amount I'll be charged? So that question is covered by me in my first question, which is titled whether the exemption is available in case the bill exceeds exemption limit of 7,500 rupees. To discuss it further, friends, in the opinion of some persons in the GST will be chargeable on the amount which is in excess of exemption limit. This is the opinion expressed by some of the lawyers. However, in my view, it is not so. I have in support a notification issued by the CBEC on 22nd July 2019, wherein GST will be chargeable on the entire amount and not on the amount in excess of exemption limit. This is a very important topic, which is very important for all the societies to understand that once the bill exceeds 7,500 rupees, the entire amount is subject to tax and not the excess over 7,500 rupees. Having understood this, very important question arises, which is that if I own more than one flat in a society, will I be entitled to basic exemption for each of the flat owned by me, or I get only one deduction? Say, for example, if I own two flats and the maintenance of my two flats is 9,000, 9,000, 18,000, will I get 18,000 minus 7,500 and get the have to pay the tax, or I will get 7,500 rupees for each of the flats and I'll be liable for a deduction for I'll be eligible for the deduction for all the flats separately. This is also a very important question which is asked by many clients during our practice I have come across. Friends, my view is the exemption is available separately for each of the flats. Let me repeat. The exemption is available separately for each of the flats owned by one person. What is the reason? Because he is considered to be member for each of the flats in a building or a complex. This has been clarified by the circular issued by CBEC on 22nd July 2019. So I repeat, if I have more than one flat, the exemption of 7,500 is available to me for both the flats. As far as my charges are less than 7,500 rupees, I will be eligible not to pay the tax in both the cases separately. I'll repeat it. This is clarified by CBEC in circular on 22nd July. It is clarified in the circular that if the monthly bill is up to 7,500 rupees, it will be exempt for each of the flats. But if the same exceeds exemption limit, the entire bill will be taxable for each flat. That means I'll repeat that example. If my maintenance is 7,500, 7,500 is in both the cases, I will not be liable to pay GST in case of both the flats. But if my charges are more than 7,500 rupees,
in both the flats, then I will have to pay full tax, GST on both the flats. There will be no basic exemption. So one benefit is there if I have multiple flats. For multi-flat, if the maintenance is less than 7,500 rupees, I am eligible for the deduction. However, if once my turnover, the charges exceed 7,500 rupees, I'll be liable to pay GST on full amount. And now that it is very clear to us as to what will be chargeable amount, let me bring to your notice as to what charges are liable to GST note or not. Now we'll go to the next question. Having come so far, now the next question which will arise is, what charges are liable to GST and what charges are not liable to GST? Here again, the presumption is society registered. Okay. And this is the sixth question which I have listed here in above at the time of starting my presentation. That question is, which goods and services provided by cooperative societies are liable to GST? There are different views on chargeability of GST on some of the charges collected by society. Now, what are the disputable? What are the debatable points which have been raised from time to time from various forums and the social media as well as the meeting of the society? These charges are mainly sinking fund, repair fund, non-occupancy charges on the one hand, and car parking charges and simple interest for late payment on the other hand. So I will now take up every of these 5 charges and deal with them. There is a difference of opinion on the issue that I told you previously about sinking fund and repair fund. Let me explain that these charges are subject to GST, for which I draw support from FAQ issued by the department. Now, FAQ is issued by the department sometime in the year 2017, wherein it has been specifically mentioned that you may note that these charges are collected by resident society for supply of services meant for its members, and the same are not procured from third-party services provider for common use of the members of society. That means the exemption is granted only if the goods or services are procured from third party for common benefit of all the members. Let me repeat, sinking fund and repair fund are not something which are being charged or collected by the society by way of reimbursement. These are the charges of the society itself for providing service to its members, but in future. In fact, as far as the repair fund is concerned, the repair fund as per the bylaws as well as per the act and as per the rules, that is Maharashtra Cooperative Societies rules, the repairs and maintenance fund is allowed to be used by the managing committee for day-to-day repair of the building and properties of the society. And therefore, one cannot say that these charges are the third-party procured charges for common use. And therefore, in my view, sinking fund, repair fund are very much chargeable to GST. Now, coming to the third item, non-occupancy charges. Friends, non-occupancy charges are also something which charges are collected by the society on its own, and therefore that is also subject to GST. Now, the most important 2 things are car parking charges or the simple interest for late payment. These 2 are also generally managed by these societies on their own. The car parking space is owned by the society, or that is de facto owner of the property is the society, and therefore that property is allowed to be used by the members for a charge which is called the car parking charge, and therefore these are the services provided by the society and not procured from the third party, and therefore it is very much subject to GST. Likewise, interest. I'll repeat. There is a difference of opinion on the issue of charging GST on sinking fund and repair fund. I'll repeat it so that it gets clarified. However, I am very clear that they are subject to GST, for which I draw support from the FAQ which I told you. Now, we are further clear as to what charges are subject to GST and what charges are not subject to GST is to be understood. Now, what are the exemptions?
What is basic exemption? What happens in case of more than one flat? And what happens to basic exemption in case where the charges exceed basic exemption? All these issues are settled in above 6 questions by me. Now what remains is, what supply of goods or services are exempt from GST? The 7th question which I had listed. And that questions, I will say, friends, statutory payments by the society, such as property tax is a statutory payment. NA tax is payable to the government of Maharashtra, as far as we here are concerned. Property tax is payable by the payable to the local authority, and therefore, in a way, the society is pure agent. And pure agency is not subject to GST under the GST laws. And therefore, property tax and NA tax, even though collected by the society from members and paid to the respective authorities, namely the local authority, BMC here in Mumbai, and the state government, these are not liable to GST. There are certain products which are out of GST right at the national level. What are these? Electricity and the petroleum products. And therefore, electricity and petroleum products, if at all procured by the society and provided to the members, those are not liable to GST. However, let me caution, let me clear. Say, for example, take the case of electricity. Now, society has an electric meter on its name, and this electricity is used for pumping the water, for running the lift, for managing the car parking space. So, if electricity is used by the society for providing its own services to the member, then in that case, it doesn't remain electricity charges. What remains is the car parking charges, lift repairs, maintenance, running charges, water charges, etc. And therefore, I'll repeat, electricity is used to provide water, used to operate lift, to manage parking system, for lighting of the common areas in the society, then those services are taxable. Which services? The services which are mentioned here: lift, water, electricity, and parking. Not really. Common area lighting. These services are not procured from third party provider for common use, and therefore will be taxable even though electricity is not taxable per se. Another question may arise that if society procures any goods or services not for common use in the society, because we have heard the word common use multiple times in the answer to lot other 6-7 questions before this. Now, what is this common use? If the goods or services are procured by the society not for common use, but for a use of a specific member, then that particular charge is subject to GST. It is not covered in the exemption limit. Let me repeat. What is exempt under 7,500 rupees? The charges which are for procurement of goods or services from third party for common use of the members of the society, then only it is covered under the exemption limit of 7,500 rupees, and not in case the society procures this. Say, for example, one member has a particular complaint. The society procures some goods or services and provides to that member, and then collects the charges or get reimbursement of the charges from that member. These charges will be subject to GST. Friends, these goods or services from third-party service provider is obtained by society, not for common use, but for particular member. This service will be taxable in the hands of that member when the society recovers the same from him for such service. I would like to summarize once again certain specific charges collected by society. Property tax, as I have explained you in detail, it is not liable to GST for two reasons. It's a tax taken by the local authority which cannot be taxed again in the hands of society. Moreover, society is acting as a pure agent,
which is otherwise also out of purview of the GST laws, pure agency. Then water charges. If the water tax by the local authority, that will not be subject to tax. However, if the water is not supplied to members out of the local authority supply, but it is the tank water or the bottled water is supplied to the members, then the GST will definitely be applicable because the exemption is limited to what is supplied and taxed by the local authority. Then comes the any tax, which is collected by the state government. Friends, Maharashtra state government or electricity charges, this heading is GST is not leviable on any tax, electricity charges which are collected under other statutes from individual flat owners. Means these are charges where otherwise also to be collected from the flat owners only. These charges are not on the society. These charges are collected by the government or the local authority from the flat owner himself, and the society is acting only as a pure agent, which takes by one hand and gives by another hand. And therefore, these are not taxable, which I have explained very much in detail. I hope it is quite clear now as to what is taxable and what is not taxable. Let me now, in short, deal with the GST paid by the society on the goods and services procured by it from third party supplier. If the society is eligible to take the benefit of such payment of tax, when the society buys some goods or services from security agency or so other supplies, capital good, blah, blah, then the GST is charged by the supplier of goods or supplier of services. Now, this increases the cost of the society in a sense. However, the question before us is whether the tax paid by the society on procurement of these goods and services is available, or the benefit of that tax is paid can be taken by the society while making the payment to the government under the GST. Yes, it is very much available. And therefore, the next question which I had posed initially was, what are the benefits of input tax credit, whether it is available and what is available? Input tax credit is of the GST paid on capital goods, that is generators are purchased for lift and other system, water pumps are purchased, lawn furniture is purchased by big societies. Then the goods such as taps, pipes, other sanitary and hardware fittings are purchased by the society. And there are input services like repairs and maintenance services, annual maintenance contract of lift and car compensation and other assets of the society. The GST is paid by society on all these purchases. This GST is available, which was not the case under the previous regime. Which previous regime? Service tax regime. And therefore, under the GST, the societies are to that extent benefited that they are eligible to get the benefit of input tax paid by them on the capital goods, other goods, as well as on the services procured by them. Now, so far, it is very clear as to what is chargeable, what is not chargeable, what benefit is available. But one important aspect which is missed by us always is there are certain services, say for example, legal services. If a society comes to me and I charge you some legal fees, I will not charge you the GST because GST in my hand, legal fees are not chargeable. Therefore, I will not charge. However, that burden is cast on the society. And therefore, if the society has availed my services, legal services, it is required to pay GST on its own under the mechanism of reverse charge mechanism called. Let me tell you, the reverse charge mechanism taxes paid by the society are also very much available as an input tax credit benefit. There is no doubt about it. Friends, having shared my understanding
on the applicability of GST cooperative housing societies. We examine the mute question as to whether the services of society have become more expensive. If you recollect, hue and cry was raised when the GST was introduced and the services to the cooperative societies were subjected to GST. But at that time, one important aspect was lost sight of by everyone, that under the then regime of service tax provision, the benefit of ITC on capital goods and other purchases was not available, whereas under the present regime of GST, the benefit of income tax credit paid on the goods or services is available, and therefore, in my understanding, to that extent, the provisions of GST are much better than the service tax provision. And the cost of services of the societies, which was argued is getting increased, is not the correct position. The correct position is that the cost of services of a cooperative society is reduced in the hands of the members. Friends, I have done my best to bring to your notice some of the aspects of applicability of GST to cooperative societies. There may be some gray areas which may require very elaborate arguments for which this is not the forum. Let me honestly admit that this seminar has helped me update and review what I learned when the GST laws were introduced. Friends, while concluding, let me say I may have to leave the seminar, for which I take permission of our Anand Gupta ji and Ramesh Prabhu after concluding this or after some more time. Once again, as a Rotarian, I express my hearty thanks to past President Rotarian Anand Gupta, Rotarian Naresh Merchant, who was instrumental in entering into and finalizing the terms of MOU with MSWA, my director Minu Lalwani for the current year, who I think has not been able to attend this seminar, our President Samapti Patel, who also I think has left early, but last but not the least, CA Ramesh Prabhu, the chairman of MSWA, for his support and cooperation, without which this layman's education series could not have been possible. Thank you, friend. Thank you once again. कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन चैट बॉक्स में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुतार. हरिराम चौधरी जी, पहले उनका थैंक यू तो बोलने दीजिए. मिस्टर सुतार का अच्छा प्रेजेंटेशन रहा. आप थोड़ा उनको रिलैक्सेशन, हमारे जो स्पीकर है वो एकदम रिलैक्सेशन रहे, रिलैक्स रहे, पानी पिए, देन फिर उनके चैट बॉक्स में जो सवाल है वो सवाल भी लेंगे. हरिराम चौधरी जी धन्यवाद. सुतार साहब धन्यवाद आपका. मैं आप थोड़ा चैट बॉक्स में सवाल हाइलाइट्स कर ले जब तक मैं इनवाइट करूंगा. Yes, I'll be able to reply to the query. The only issue is yes sir. और सर आप पानी वगैरह भी पिए, रिलैक्स होके पानी वगैरह, जूस वगैरह जो आपको एज यू विश. मैं आनंद गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा. जब तक आनंद गुप्ता जी बताएं. आनंद गुप्ता जी, रोटरी और महासेवा का ये जो गठबंधन है ये करीबन 2 साल पुराना है, और ये जो ऑनलाइन गठबंधन है जो वर्चुअल हम देख रहे हैं, ये दूसरा गठबंधन है. दूसरी बार हम आ रहे रोटरी और महासेवा. क्या कहेंगे आनंद जी? अब देखिए, 2 साल पहले जुलाई 2018 में और ये फिक्स किया गया कि रमेश प्रभु जी के गाइडेंस में रोटरी क्लब और महासेवा दोनों मिलकर जितने भी एस्पेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, कोऑपरेटिव सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों के प्रॉब्लम, और वो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सिक्योरिटी के मैटर हैं, फायर सेफ्टी के मैटर्स हैं, क्लीन अप के मैटर है, कॉरपोरेशन से संबंधित मैटर्स हैं, उन सभी को हर महीने एक बार फर्स्ट संडे को लिया गया. और मुझे बड़ा खुशी हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब कि कोइंसिडेंटली उस समय मैं प्रेसिडेंट था जिसको ये लिबर्टी और प्रिविलेज मिला कि जॉइंट वेंचर किया जाए से और इसको सक्सेसफुल किया जाए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये 23-24 जो लेक्चर हुए, इससे हम निश्चित तौर पे जो हमारा रोटरी का एक मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है टू डू ए गुड कम्युनिटी सर्विस,
और सर्व अबव ये जो हमारा एस्पेक्ट है, और जो रोटरी हमेशा से मैनकाइंड के उसमें लगी रहती है। हमारा रोटरी क्लब जो अपना मेडिकल सेंटर चलाता है, श्रुति स्कूल चलाता है, ब्लड बैंक चलाता है, और बहुत से उन सब में ये एक अच्छा एस्पेक्ट जुड़ा, और सक्सेसफुली हम लोग ये 23-24 लेक्चर कर सके। और उसके लिए मैं रोटरी क्लब के तरफ से, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट के तरफ से पर्टिकुलरली रमेश प्रभु जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि रमेश प्रभु जो काम कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारे साथ किया वो तो एक बात है, लास्ट में 7 दिन से हर दिन उनका एक नए सब्जेक्ट पे वो रहता है। उनका ये जो पहुंचने का ये रिमार्केबल, वो हर एक में नहीं हो सकता, और उसके उनको उनकी जितनी कम है। मैं बड़ा खुश होऊंगा यदि हम लोग ये जॉइंट वेंचर और भी कंटिन्यू कर सकें। दूसरे और एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर अगले जुलाई अगस्त में भी हम आगे बढ़े। और इन शब्दों के साथ मैं वंस अगेन रमेश प्रभु जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार से मैं सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन्होंने इस में प्रेजेंट रहकर और इससे कनेक्ट रह के ये सभी मैसेज अपने मेंबरों को पहुंचाया, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट। थैंक यू जी, धन्यवाद आनंद जी। जैसा मैं आपको बता दूं, मैं भी रोटरी क्लब जो जुहू तारा पे स्थित है उससे पर्सनली रूबरू हूँ। जुहू कोलीवाड़ा में मेरा ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, और मैं करीबन 2011-2009 में वहाँ रहा भी हूँ। अभी तो रेंट पे हूँ, और मैं अभी फिलहाल मलाड वेस्ट में रहता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स में। तो जुहू कोलीवाड़ा के जो तमाम लोग हैं आनंद जी, बड़े अच्छी नजरिए से आपको देखते हैं, क्योंकि कुछ कैंप होता है तो वहां पे मिलता है जो चर्च है, चर्च के थ्रू तमाम जो फर्नांडिस वगैरह तमाम लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट वहां पे, वो मैसेज मिलता है, और वो सबसे पहले आपके जो कैंप वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फ्री कैंप वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, और उनको फ्री जो मिलती है फैसिलिटीज वगैरह, आप लोग फीस वगैरह का भी करते हैं, जो स्कॉलर्स हैं उनका फीस वगैरह का भी करते हैं। तो जुहू तारा स्थित जो रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट है, ये बहुत बेहतरीन, यहाँ तमाम जितने लोग हैं, आनंद जी ने तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी जब अध्यक्ष है, बहुत सारे काम किए, और आज के भी जो प्रेसिडेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज को आगे बढ़ा रहे। एक तारीफ के काबिल बात करेंगे इसकी, और जज्बा है इन लोगों का, तमाम लोगों का, रोटरियन जितने हैं। हमारे रोटरी में प्रेसिडेंट हर साल बदलेगा, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं, जो सोशल वर्क है वो सेम रहेगा, चालू रहेगा। और वो हमें मतलब अभी इस साल भी जैसे प्रेसिडेंट वापस बदलेगा 1 जुलाई को, लेकिन फिर भी वो कम्युनिटी सर्विस चालू रहेगी। बरोबर, मतलब जिस प्रकार जैसे चीफ मिनिस्टर आज वो है, कल देवेंद्र फडणवीस थे, तो उन्होंने जो जारी स्कीम थी वो स्टॉप नहीं कर सकता नेक्स्ट सीएम। आपका इस तरह का फार्मूला है। हमारा रोटरी का तो अनरिटन रूल है। यस वही बोल रहा हूँ मैं। अब शायद नहीं भी बदले, लेकिन हमारे यहाँ निश्चित बदलाव होगा। नहीं, बदलाव होगा, लेकिन जो आपके जो काम चल रहे हैं, जो पहले अध्यक्ष के दौरान काम हो चुके हैं, वो काम कंटिन्यूटी जारी रहेंगे। 100%। यस, वेरी गुड। अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सुतार को, हीरालाल जी को, वो आए और तमाम जो हाईलाइट किए गए सवाल जो है तमाम रोटरियन के, तमाम जो लोग जुड़े आज हमारे पार्टिसिपेंट, उन लोगों को जवाब दें और बताएं। जी सुतार साहब। Yeah, please, what is the query? Please let it be highlighted once again. I think one was regarding non-occupancy charges, correct? Yes, sir. Can it be highlighted once again, one by one, so that I can attend to them? एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सोसाइटीज ऑफ बिल्डिंग। Yes. हरिराम जी हाईलाइट कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सोसाइटीज बिल्डिंग, एक तो ये प्रश्न है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सोसाइटीज बिल्डिंग। और दूसरा प्रश्न ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि कबर्ड लेके आए हैं या फर्नीचर लेके आए हैं, या अभी जो पीपीई किट्स लेंगे और या थर्मामीटर लेंगे, ये सारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा क्या? Yeah, okay, let me tell you one by one. There are two issues. Number one, first of all, insurance premium. Now, as far as the insurance premium is concerned, when the insurance is taken for the entire building, there is a survey of the building, and if there is no additional charge taken by the insurance provider, then the insurance premium paid becomes a part of the service charges, and it is to be collected in the ratio of the area of each of the flats in the building. However,
if the insurance company charges some specific increased premium on account of certain hazardous material stored in a particular flat, then in that case, the additional premium charge is to be collected specifically from that particular member, because of which the insurance premium is increased. So insurance is very clear. It's a part of the service charge, and therefore service charges are taxable. As far as the service charge is concerned, service charge per se is not covered under the provisions of one particular entry is there, clause 6 of bylaw number 65, the model bylaws, which refers to service charges. Now, this service charge does not include this insurance, but insurance is separately covered under bylaw number 67, which says, as I said, the insurance premium is to be capital expenditure. सुतार साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आप शायद उनका फोन आया है, शायद से वो जुड़ेंगे। हरिनम जी, हाँ फोन आया है शायद से। बिल्कुल। हाँ जुड़ गए, प्लीज। Yeah, see, the capital expenditure for the property of the society is not, see, as we know, capital expenditure is a part of the capital and not the maintenance expenses, and therefore society will not collect it from the member. However, the society may not have the funds for incurring expenses for capital expenditure, correct? In that case, the society can call the general body meeting and decide as to what contribution will be collected specifically from the member, and that collection is subject to GST because it is a fund and the fund is subject to GST. So capital expenditure is not collected or reimbursed from the member. What is being charged from the member is the additional contribution towards the fund, and therefore that contribution will be subject to GST. Coming to the third item, which I am told PPE and other things which are now being purchased by the society as per the guidelines, which Mr. Saxena will deal with. Now these PPEs and masks and chemicals and dispensers, then all these expenses incurred by the society. Let me tell you, the word common use I have highlighted. If these expenses are incurred for the common use, then this will be part of the collection. However, I have come across some cases where in some big complexes, they have purchased PPEs and other masks and all these things, and the vendors are not allowed in the building unless that vendor uses the PPE or the mask, the cost of which is being collected from the member. So both these will be, the second case will be collecting separately reimbursement from the member. And the first will be the common use of all. Say for example, for all security guards, the PPE which are given, then it is for the common use, which will be covered under the 7500. मैं सर ऑडियो में से था, हाँ सुनता हूँ. You got it? Thank you. So this is a very clear. Okay. We have to move forward. आपका जो बाकी का सवाल है हम लोग बाद में पर्सनली एडवोकेट हीरालाल जी देंगे. Let us move ahead. We have 57 members today. हालांकि आपको पता है आज हमने एक नेशनल प्रोग्राम रखा है. हमने गया 4 वीक से हर संडे को रेरा डे मनाया गया. तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफी मांगता हूँ. 11 बजे का प्रोग्राम हमने 9:30 को शुरू किया. आपने हमें कोऑपरेट किया और हर संडे हमने 11 बजे से लेके 1 बजे तक अभी रेरा डे, मतलब रेरा का अलग अलग राज्य का 28 स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट्स का हम लोग ला रहे हैं और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं. या Ramesh bhai,
As I requested initially, with your permission and permission of Anandji, I would like to leave the meeting. Yeah, no problem. That is fine. So thank you very much, Hiralal ji. And प्रभु सर, yeah, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में आप जो टास्क वो बनाया महासेवा ने, महासेवा का जो टास्क फोर्स है तमाम अवेयरनेस करने के लिए, उसका 1 मिनट में आप बताएं, तभी रोटरियन लोगों को, रोटरी क्लब के लोगों को, प्लीज। राजीव सक्सेना जी, जो हमने एक कोविड टास्क फोर्स बनाया है जिसका अध्यक्ष है हमारा राजीव सक्सेना जी। आज उनके कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस से वो नहीं आ पा रहे, बट अदरवाइज कोविड टास्क फोर्स का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आज तक बहुत सारा सर्कुलर गवर्नमेंट का, इंग्लिश में है तो मराठी में है तो इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करते हुए, उसको वेरीफाई करते हुए लोगों तक पहुंचाया है। मैं कुछ हाउसिंग सोसाइटी को संबंधित कुछ सर्कुलर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। 24 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ने पहला सर्कुलर लाया जिसमें ये बताया गया कि जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग है बिकॉज ऑफ द कोविड, तो इसको आप जो है डिजिटली आप मीटिंग कर सकते हो। सो 24 अप्रैल 2020 के बाद आज डिजिटल मीटिंग हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया, जो ऑडिटर का जो पैनल है, वो ऑडिटर का पैनल एक्सपायरी हुआ है 31 मार्च 2020 को, तो नया पैनल बनाने में टाइम लगेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने खास करके उसको एक्सपांड किया, उसको पोस्टपोन किया और इसी पैनल को कालावधि बढ़ा के दिया है। वो कालावधि है अप टू 30 सितंबर 2020। लेकिन जब हमने गवर्नमेंट से पता किया, उन्होंने ये भी बताया कि ये कालावधि भी हमें पता है कि कम पड़ेगा, इसके लिए शायद मार्च 2021 तक वो ऑडिटर का पैनल कंटिन्यू होगा। इसके लिए आप ऑडिटर को जो अपॉइंट करना है वो पैनल में कर सकते हैं। अगला सवाल हमने कोऑपरेटिव कमिश्नर को पूछा था लास्ट टाइम टेट बेट में, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, जनरल बॉडी है और अकाउंट्स है, उसको डिले होने वाला है। तो उसको डिले एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न, वो आपको 30 सितंबर के अंदर ही लेना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मे बी दी थिंग्स। फिर भी एक उसको प्रावधान करने के लिए एमसीएस एक्ट में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट में बदल करने का प्रयास कर रही है और वो करने के बाद उसको भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। अभी सवाल उठता है क्या हम डिजिटल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहल है। उसके लिए 13 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये बताया गया कि आपको जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कंपलसरी करना है वो भी आप डिजिटली कर सकते हो। इस तरह का बहुत सारा जो सर्कुलर निकला। और आखिर में एक सर्कुलर मैं बताऊंगा, वो है इलेक्शन को लेकर। जो 250 मेंबर का नीचे का जो सोसाइटी का मेंबर का इलेक्शन है वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उधर हमारा क्या नहीं है, हमारे यहाँ रूल्स बनानी है। तो इसके लिए अभी जून तक वो इलेक्शन भी पोस्टपोन हुआ है। मुझे लगता है वो भी शायद एक्सटेंड होगा, क्योंकि रूल बनाने में और भी टाइम लग सकता है। विद ऑल दिस अभी बहुत सारा सर्कुलर है, हमने ऑलरेडी 50 लगभग सर्कुलर इश्यू किया है। और कल रात को शाम को 8 बजे हमने एक बहुत बड़ा मीटिंग लिया था जहां 650 लोग प्रेजेंट थे। वो था हाउसिंग सोसाइटी में मेड सर्वेंट को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू था, लास्ट 15 दिन से चल रहा है। क्योंकि लोग घर से काम करते करते तंग आ गए, कुछ एल्डरली लोग हैं, कुछ पेशेंट्स है, कुछ मेडिकली उनको जरूरी है, और घर में पोता बर्तन घासना या जमीन साफ करना, उसके बाद कपड़ा धोना और खाना बनाना, ऐसे अलग अलग, और बेबी सिटिंग का, ऐसा बहुत सारा मेड्स घर में आते थे, उनको रोका था। लेकिन क्या उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कल अच्छा 650 लोग एक कंट्रोवर्शियल इश्यू में भाग लिया था। और हमने ये निर्णय लिया कि हम गवर्नमेंट के पास इसके बारे में जानकारी के लिए और लिखेंगे। फिर भी पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसके बारे में गाइडलाइन इश्यू किया है। उसी तरह से कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको गाइडलाइन इश्यू किया। उस गाइडलाइन के हिसाब से महासेवा के तरफ से हमने इसको कल का मीटिंग में अप्रूव कर लिया, और हर सोसाइटी को ये बताया गया कि ये दोनों का गाइडलाइन के हिसाब से आप जो है अपना सोसाइटी में निर्णय लेके, यदि आपको जो मेंबर को मेड सर्वेंट का जरूरी है
उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब गवर्नमेंट से पता किया, गवर्नमेंट ने बताया कि हमने कभी रोका नहीं है। जब मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ है, उसमें ये बताया गया कि व्हाट नीड टू बी प्रोहिबिटेड, तो वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में मेड सर्वेंट नहीं है, इसके लिए आप अलो कर सकते हैं, मगर फिर भी ये सोसाइटी का निजी सवाल है और सोसाइटी अपने आपस में इसको निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है इतना सब होने के बाद आज मैं आपको 61 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ गए, मैं आपको बताऊं कि सैटरडे एंड संडे हम रेरा डे करने वाले। इसके बाद सैटरडे बिल्डर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हमने जोड़ा है 10 से 12 2 घंटा। हम लोग हर सैटरडे 10 to 12, हो सकता है वो आगे जाकर वो शाम का होगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद जब हमारा पूरी कामकाज शुरू होगा, हमने ये निर्णय लिया कि जो सुबह का जो 10 से या 11 से 1 बजे तक करते थे, अभी वो शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो रोज शाम को 1 जुलाई से, आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जुलाई से हमारा प्रोग्राम रहेगा, एवरीडे प्रोग्राम रहेगा। मंडे का दिन हम प्रोग्राम करेंगे और हर बार कर रहे हैं, वो है 20 लाख करोड़। अलग अलग क्षेत्र का लोगों को 20 लाख करोड़ का एक सुविधा दिया जा रहा है। तो हो सकता है 15 दिन के बाद हम नेशनल हाउसिंग बैंक का जो रीजनल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर है मुंबई वेस्टर्न इंडिया का, मिस्टर कुंबारे, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो अगला 15 दिन के अंदर आएंगे। जो रियल एस्टेट के ऊपर नेशनल हाउसिंग बैंक के तरफ से क्या फंडिंग मिल रहा है उसके बारे में वो जानकारी देंगे। उसी तरह से हम अलग अलग क्षेत्र से एसएमई के लिए क्या है, टेक्सटाइल के लिए क्या है, बाकी का अन्य क्षेत्र के लिए क्या है, इसके पूरी बारे में जानकारी हम देने वाले हैं फ्रॉम मंडे, एवरी मंडे। ट्यूसडे हम लोग कोऑपरेटिव एक्ट के ऊपर जानकारी देंगे, नया सर्कुलर आया होगा, कायदे में बदल हुआ होगा या कुछ भी। और वेंसडे जो है हम जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन है, एग्रीमेंट फॉर सेल है, सेल डीड है, कन्वेंस डीड है, रिलीज डीड है, गिफ्ट डीड है, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, अलग अलग प्रकार का जो एग्रीमेंट्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में हम वेंसडे चर्चा करते हैं। थर्सडे हम लोग रीडेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ रीडेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा 50 से एक टॉपिक दिया है, लोग को सवाल मिटता नहीं है, तो उसके बारे में हम थर्सडे डिस्कस करते हैं। और फ्राइडे हम लोग जो है इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स, ऑडिट के ऊपर चर्चा होती है। और सैटरडे जैसा मैंने आपको बताया, हम 2 प्रोग्राम लेते हैं। एक तो हमारा टेट बेट, जो अधिकारी अपलेदारी, गवर्नमेंट का अधिकारी को हम आपके सामने लाते हैं, आपका सवाल का जवाब हम उनसे मांगते। और स्टॉल प्रोजेक्ट बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका स्पोक्स पर्सन आनंद गुप्ता जी है, तो उनका नेतृत्व के अंदर हमने एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और एमओयू ऑलरेडी ड्राफ्ट बन चुका है। हो सकता है 1 हफ्ते में हम लोग उसको साइन करेंगे और 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तब तक हर सैटरडे हम लोग 10 to 12, और जुलाई के बाद वो शाम को होगा, वो टाइम में वो 6 to 8 होगा, वो शाम को हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर बार एक एक नया आदमी को बुलाएंगे। आनंद जी, आपको सुन के अच्छा लगेगा, अगला सैटरडे हमने एचडीएल के ऊपर सेशन रखा है। एचडीएल का लगभग 50 से एक प्रोजेक्ट है, अलग अलग जगह में अलग अलग चीज की वजह से वो रुका हुआ है। हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, एसआरए का जो एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे, और जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को बुलाएंगे, फिर रेरा का अधिकारी को बुलाएंगे। ऐसे लोगों को, पैनल को बुला के जितने भी एचडीएल का प्रोजेक्ट है उनका पूरी एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को बुलाएंगे, उसके रूबरू कराएंगे और उनका सवाल जवाब कराएंगे। इससे क्या होगा, बाकी का जो भी बिल्डर का प्रोजेक्ट रुका होगा, मैं किसी का नाम इधर नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ग्रुप कंपनीज, बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द आईबीसी, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स वो रुका हुआ है। हो सकता है डीएस कुलकर्णी का बहुत सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, एक प्रोजेक्ट हुआ है, बाकी का प्रोजेक्ट को मतलब एक इंस्पिरेशन मिलेगा। उस तरह से एचडीएल के ऊपर हम अगला संडे चर्चा करने वाले, सैटरडे चर्चा करेंगे। उसके बाद टेट बेट का कार्यक्रम सैटरडे रखा है, और संडे जैसा आपको पता है रेरा के ऊपर हम प्रोग्राम रखते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हर संडे रेरा डे है, जहां नेशनल प्रोग्राम होगा रेरा इंडिया फेडरेशन के साथ
हमारा प्रोग्राम होता है। इस तरह से कार्यक्रम हम करते हैं, इसके लिए अलग अलग लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आनंद गुप्ता जी को खास स्वागत और धन्यवाद इसके लिए करूंगा कि आपने एक हर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हमें रोटरी क्लब के साथ जोड़ा है, और हमारा 2 साल से 24 प्रोग्राम हमने किया है, और अगले आने वाले सालों में भी आप नया प्रेसिडेंट से बात करके हमें वो मौका भी देंगे, ताकि हम ये जो हमारा एक नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला है वो चालू रखेंगे। और हम बहुत सारा एनजीओ को ये भी बोलना चाहेंगे, जो भी एनजीओ हमारे साथ जोड़ना चाहते, प्रोग्राम करना चाहते, उनको भी हम इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देने का हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण है, रेरा इंडिया के साथ हर संडे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रेरा इंडिया फेडरेशन के साथ। मुझे लगता है कि अमित जी जुड़े हैं, अमित जुड़े नहीं है, तो हमने रेरा इंडिया के साथ, रेरा इंडिया फेडरेशन के साथ समझौता किया है। हर संडे मॉर्निंग जो है वो प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से हमारा सिलसिला आप लोगों को पहुंचाना लॉकडाउन होने के बाद भी एक कंटिन्यू रहेगा। इसका पूरी कामकाज सुनील शर्मा जी करेंगे, उनका ये काम है आप लोगों तक पहुंचना, एक्सपर्ट्स को बुलाना। आप जो भी विषय चाहते हो और कोई एक्सपर्ट्स को बुला के कार्यक्रम करना चाहते हो, आप सुनील शर्मा जी को बोल सकते हैं। सुनील शर्मा जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि आखिर में प्रोग्राम अरेंज करना काम एक एक को जिम्मेदारी दिया जाता है। तो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना और उसको बिठाना और इनविटेशन भेजना, ये पूरी जिम्मेदारी हमारा MNS मीडिया का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुनील शर्मा जी करेंगे। तो आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, कितने भी एनजीओ उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हम प्रोग्राम इस तरह से करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो मैं अभी सुनील शर्मा जी को सौंपता हूँ। प्रभु सर, मैं धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मिस्टर सुतार यदि अवेलेबल हैं तो उनका नंबर शेयर करें, मेल आईडी शेयर करें। कुछ क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, तो वो नंबर चाह रहे हैं लोग, तो आपका नंबर शेयर करें मिस्टर सुतार, एडवोकेट हीरालाल जी सुतार। चलिए, हम दे देंगे बाद में उनको, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। प्रभु सर, मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल ऐसी कॉन्फ्रेंस में 40 लोगों का पर्सनल कांटेक्ट है। रोज मैं सुबह गुड मॉर्निंग वो लोग बोलते हैं और मैं उनको इनविटेशन पहुंचाता हूँ सुबह मॉर्निंग में या फिर नाइट में बिफोर। तो इस तरह से 40-50 लोग तो डेली हैं, और वो अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं, और अलग ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं वो अलग। तो मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से, पार्टिसिपेट से, कि आप जो मैसेज मिलते हैं इनविटेशन वेबिनार के, जो तमाम अलग अलग अवेयरनेस के और एजुकेशन सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों का भला हो सके। जैसे अभी आपको पता है स्टॉल प्रोजेक्ट का हम सैटरडे को जा रहे हैं, तो तमाम ऐसे बहुत सारे डेवलपर से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके स्टॉल प्रोजेक्ट सालों से 15-15 सालों से हैं, तो वो लोग भी कुछ तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ तो निचोड़ मिलेगा, कुछ तो निराकरण मिलेगा, कुछ तो मोटिवेट होंगे। तो वो हमारा एक प्रयास है। तो आप इस ऐसे इनविटेशन को, मैसेज को ज्यादा ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि लोग जुड़े, क्योंकि आज तो एक दूसरे से लोग मिलने से घबरा रहे, डर रहे हैं एक दूसरे जगह जाने पे, ऑफिसेस में। तो उस वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया, और ये लगातार जारी रहेगा प्लेटफॉर्म। तो जैसे प्रभु सर ने कहा कि यदि हम सुबह नहीं करेंगे तो शाम को करेंगे, रात को करेंगे 8 से 10 के बीच में। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप अवेलेबल नहीं, रूबरू नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी समस्या बताकर उसको कैसे आगे गो थ्रू करना, आगे कैसे बढ़ाना, वो कर सकते हैं। जैसा कि अभी 11 बजे के बाद हमारा एक दूसरा जो सब्जेक्ट है रेरा पर ऑल इंडिया वेबिनार होगा। और दोस्तों, इस पे रेरा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बनाई है सरकार ने, उस पर तमाम जो स्टेट है बताया, जैसे प्रभु सर ने, दिल्ली नोएडा से लोग जुड़ेंगे, जयपुर से लोग जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जो हैं इंदौर से जुड़ेंगे, भोपाल से जुड़ेंगे, बेंगलुरु से जुड़ेंगे, गुजरात से जुड़ेंगे, महाराष्ट्र से, मुंबई से जुड़ेंगे, तमाम अलग अलग स्टेट से लोग एक्सपर्ट जुड़ेंगे। और अमित कुमार केडिया जी यदि आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अमित कुमार केडिया जी नहीं है अवेलेबल शायद। तो जितने तमाम लोग हैं जो आज इसकी रेरा पर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट, तो उसके लिए सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी अभी फिलहाल 75 और ये 11 बजे के बाद सीधा लाइव होगा, और तमाम जितने लोग जुड़ रहे हैं कृपया जो भी विषय है आज का हमारा, उस विषय पर चैट बॉक्स में सवाल करें, क्वेश्चन करें, ताकि वो आखिरी में, अंत में उसका जवाब दिया जा सके और
सभी पार्टिसिपेट जितने जुड़े हैं दोस्तों, जैसे 45612, कृपया आप अपना रीनेम करें। रीनेम करेंगे तो क्या है, आपको हम